जैसे ही मैंने बोला अभी तपस इज अ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस बर्ड फॉर ISR applications. लेकिन this variant, in addition to doing all the roles of ISR, it can also carry the weapons. See here is a small scale model of 1/7 in scale. This is not the true bird. The actual bird is about 18.6 meter wingspan. We are going to work on high altitude long endurance drones. And the future air dominance is predominantly on the unmanned combat aerial vehicles. ड्रोन दैट इज़ ऑरलैंड 10 दैट इज़ ऑफ रशिया। तो उसमें क्या है कि वो पहले टारगेट को डिटेक्ट करता है, उनको वार्निंग देता है। तो इस तरह के भी ड्रोन्स क्या भारत बनाने की तैयारी है? भारत में है ऐसे ड्रोन? So see, the point is, as I was telling you, there is lot of intelligence as it is acquired in air. We have a huge ground operational systems which is continuously processing the data. So, and that is in downstream through secure data links. So the data links which are in the unmanned aerial vehicles are swap optimized and secure data links, unlike other UAVs. So they are jam resistant. You cannot actually jam them. And built on a redundant channels at frequencies. इस वक्त हम DRDO के स्टॉल पर हैं और हम ये जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि DRDO के एरिया डिपार्टमेंट ने क्या क्या इस बार डेमोन्स्ट्रेशन में रखा हुआ है, क्योंकि तापस ड्रोन का बड़ा जिक्र आ रहा है। तापस के लाइव जो फीड्स हैं उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो शुरुआत हम तापस से ही करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप सर मौजूद हैं DRDO से। वेलकम। इस बार क्या कुछ आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है और क्या है इस बार खास? Okay, so what you see here is tapas, the indigenously built. It's an advanced tactical platform for aerial surveillance, and in the category of medium altitude long endurance, typically can fly about 30,000 feet altitude and endure for 18 hours plus, line of sight and beyond line of sight up to 250 kilometers, and beyond line of sight when you go, you can actually, using a satellite communication, you can go up to 1,000 kilometers. So that's the capability of this bird. Now, if you really look at it, this is completely indigenously designed and developed by Aeronautical Development Establishment with a lot of partner labs of DRDO also. And it has a complete suite of mission sensors, electro-optics, IR sensors, the synthetic aperture radar, you have the IFF, TCOS, the collision avoidance systems, and ELINT, the electronic intelligence, communication intelligence systems. Several systems all are equipped on this bird, and it is primarily meant for doing the intelligence surveillance, reconnaissance. ये भारतीय सेना को तो कई लिहाज से मदद भी पहुंचाएगा। तपस की लाइव फीड्स आप लोग दे रहे हैं एरो इंडिया में। फाइटर जेट्स नीचे हैं और उसके ऊपर तपस ऊपर से सब देख रहा है। तो कितनी ऊंचाई पर तपस इस वक्त है जहां से लाइव फीड्स आ रही हैं? That's an interesting thing. As the saying goes, that you get a better appreciation for a product when it actually you do a live demonstration. बिल्कुल। Today in this Aero India 2023, हम this impression, ये impression हम create करना चाहते हैं public को, that we do have the power of flying a bird in a collateral airspace along with all other aircrafts flying, separated on altitude, flying at 15,000 feet, capturing the complete air show and streaming down for the live video streaming to the. और ये वाकई में बहुत कमाल है। मतलब लोग सोचते हैं कि हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, वो ऊपर जाएंगे तो कहीं कोलिजन ना हो जाए, किसी तरह घटना ना हो जाए, लेकिन ये सब कुछ प्रिवेंट करते हुए और तापस जो ऊपर से फीड्स दे रहा है। दूसरी तरफ एक और प्रोडक्ट आपने बताया कि ये उसका दूसरा वर्जन है आर्चर। इसके बारे में जरा डिटेल में बताइए, क्या है ये? Actually, before we go there, जिसके बारे में आपने बताया था अभी, now it is flying in a space and it has separated in altitude. Besides that, it has got sensors on board for identification of friend or foe. We are being coordinated with the air traffic controller. We have a collision avoidance system on board. It has capability to, in case of a failure, to return home and land autonomously. So it has capability for autonomous takeoff and landing. The complete avionics and sensor suite that goes into this bird is the most advanced and completely indigenously built. Now coming to this variant of tapas, जिसको आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने बोला अभी, tapas is a medium altitude long endurance bird for ISR applications. लेकिन this variant, in addition to doing all the roles of ISR,
it can also carry the weapons. Oh. And this is the most advanced complete configuration is built by the ADE designers and the production partners for realizing the two variants or HAL and Bharat Electronics. So we will have the first flight of this variant in June. Whereas the Tapas is already flying for more than 117 hours now and successfully flown. It's an advanced stage of its readiness and will be going into the production very soon. ये क्योंकि आर्म्ड है तो ये ज़्यादा डेडली भी है। इसका जो टारगेट को हिट करने का इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। So the first flight of this variant of Tapas will happen in June. And we have the complete studies for weaponization, weapon release algorithms, store separation studies, all are done. And we have systems on board for complete controls. Progressively from this June, another 1 year, we'll have the weapon release done on this bird. इस पे मेंशन किया हुआ है 300 kg वेपन कैरिंग विद एल्टीट्यूड ऑफ 30,000 फीट। 300 kg का हथियार ले जाना चैलेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उतने ऊपर आमतौर पर हम जब ड्रोन्स की बात करते हैं 50-60 के बाद उनको अपना डायमेंशन बहुत बड़ा करना होता है, तो क्या इसका डायमेंशन बहुत बड़ा होने वाला है? What you see here is a small scale model of 1/7 in scale. This is not the true bird. The actual bird is about 18.6 meter wingspan. Both of these are only the models. The real bird is very, very big. 18.6 meter wingspan. And it's a huge bird in terms of the dimensions, 1,700 kg all of weight hai. It is powered by an engine which is 180 HP. The engine is indigenously built in India. With another DRDO laboratory, VRDE, and also with a private partner assisting us in building this. So all this is matured to a point where we are now talking about production ready Tapas variants. ये है आर्चर एनजी। आर्चर एनजी जो 30,000 फीट से ऊपर जाएगा, 300 kg का जो है वेपन ये कैरी कर सकता है। और ये जब अपनी पहली उड़ान जून में लेगा तो वाकई में ये भारतीय सेनाओं के लिहाज से, तीनों सेनाओं के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी मदद होगी। यहाँ पर DRDO के और भी ड्रोन्स हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। ये जो है वो आर्चर है, वो आर्चर एंजिन था। ये कितना अलग है, कैसे काम करता है ये? So now we have unmanned aerial vehicles of different category for different missions. ठीक है। Now what you see here, Archer, is a short range unmanned aerial vehicle, which can go up to 250 kilometers, can endure for 10 hours, and can carry weapons of man-portable ATGMs, and can deliver the weapon. And in addition, it has got the payloads for doing the ISR operations, the intelligence, surveillance, and reconnaissance operations. And when all these aircrafts, unmanned aerial vehicles, are flying in air, one thing one must appreciate is that we have a huge ground complement, advanced ground control stations. So the GCS, the ground data terminal, the telemetry systems, all of this is the common advanced ground control stations हैं. All the UAVs what you see here, इन सबको उड़ाने के लिए हम एक ही AGCS सूट को यूज़ करते हैं। मतलब अलग-अलग जरूरत नहीं है आपको? ज़रूरत नहीं है। That's a unique feature of the unmanned aerial vehicles built by ADE. Because for the complete fleet of unmanned aerial vehicles, short range का होगा या medium altitude long endurance का और high altitude long endurance का, और फ्यूचर में और जो भी बनेंगे सबके लिए AGCC हम यूज़ करेंगे। वाह। और इसके अलावा ये जो अभ्यास है इसके बारे में ज़रा बताइए कि अभ्यास क्या कर सकता है, क्योंकि DRDO जो बनाता है उसको उन प्रोडक्ट्स पर देश को शक नहीं है, लेकिन देश जानना चाहता है। So this is basically an aerial target. So completely indigenously done in-house by ADE engineers, ADE scientists. And okay, the main aim of this particular vehicle is to serve as a target for for missile practices. Like say manned aircraft takes off, they can do the firing exercises. They require a target. So this is the target. Abhyas is practice. Abhyas is practice. In that sense, we have put it. The name is given like this. And high-speed expendable aerial target
इसके पिछले वेरिएंट में हमने वी वर यूजिंग other variants which were actually recoverable. We used to call that as a pilotless target aircraft. ओके So then the user's perception, because the launch logistics had to be simplified. So हमने दूसरा वेरिएंट को बनाया है. This is expendable, low cost variant है, expendable target है, and it is completely now we have done the several trials. It's almost production ready, and we also have production partners already with us. तो जो एडी आपका डिपार्टमेंट है, जो ब्रांच है डीआरडीओ का, वो और क्या क्या ड्रोन्स के मामले में नया लेकर आ रहा है और आने वाले सालों में और क्या हमें नया देखने को मिलेगा? So now you have seen multiple variants here. The future is we are going to work on high altitude, long endurance drones, ओके and the future air dominance is predominantly on the unmanned combat aerial vehicles. ओके So which are what you see these are slow varying birds. I mean their speeds are much lower. As you go for a combat scenario, you require a lot of maneuverability and also weapon carrying capability. Plus it is unstable birds for the agility that it demands and high speed. So we are working on all the technologies associated to equip India in the unmanned combat aerial vehicle category of UAVs. Yeah. मुझे एक बात समझाइए कि कैमिकेज ड्रोन्स जो होते हैं, जो अटैकिंग ड्रोन्स होते हैं, उनको लेकर डीआरडीओ की क्या तैयारी है? क्या इस तरह के ड्रोन्स हमारे पास जो हैं वो हैं या फिर हम उनके लिए आगे काम करने वाले हैं? See, I can tell you now. We recently AD has flown. If you have read in the newspapers, Yes. July 2022, we had the first flight of autonomous flying wing UAV taking off from our aeronautical test range. Okay, that is actually a scaled unmanned combat aerial vehicle, which has the capability to fly autonomously, take off and land. ओके And you can easily equip that unmanned aerial vehicle with the weapons can be used for kamikaze variants. ओके You decide feed the coordinates where you would want it to go, and it can go and do the destructions. ओके So it is all the technologies and the products are all aligned. So given the go ahead, we can build the products and realize them. The kamikaze variant is just an extension of an idea of the existing aircrafts. एग्जैक्टली बिकॉज क्योंकि हुआ क्या कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ना इस तरह के ड्रोन्स का बड़ा नाम आने लगा। अगर आप ऑरलैंड की बात करें जो रशियन ड्रोन है So, to tell you now, this is used as a target. But in this target, we can actually replace in the section of the nose. I can put the weapons, warhead, and can use it for. This can go up to 400 kilometers. So you can imagine what it can do. So the point is, kamikaze variant is just an extension of an idea, and adjusting the modularity of this stuff and putting the warheads in appropriate place instead of another payload that you are using for another mission. Yeah. देयर इज वन इंटरेस्टिंग ड्रोन दैट इज ऑरलैंड 10 दैट इज ऑफ रशिया। तो उसमें क्या है कि वो पहले टारगेट को डिटेक्ट करता है, उनको वार्निंग देता है। तो इस तरह के भी ड्रोन्स क्या भारत बनाने की तैयारी है? भारत में है ऐसे ड्रोन? So see, the point is, as I was telling you, there is a lot of intelligence as it is acquired in air. We have a huge ground operational systems which is continuously processing the data. So, and that is in downstream through secure data links. So the data links which are in the unmanned aerial vehicles are swap optimized and secure data links, unlike other UAVs. So they are jam resistant. You cannot actually jam them. And built on a redundant channels at frequencies we operate, and all the data acquired when the aircraft is flying in air transmitted to the ground control stations, and the information dissemination happens there. So the target identification, detection and recognition, and also tracking. So we have complete suite of software residing in a GCS which can aid in all these operations that you are asking about. Yeah. सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, क्योंकि भारत लगातार ड्रोन्स के मामले में भी और डीआरडीओ जो है वो नए नए मील के पत्थर साबित कर रहा है। तपस की बात करें हम, आर्चर की बात करें, या फिर जो आर्चर ING की हमने आपको वो मॉडल दिखाई, जब ये सब कुछ ऑपरेशनल हो जाएगा तो यकीन मानिए भारतीय सेनाओं के पास वो ताकत होगी जो दुनिया के कई बड़े देशों के पास भी नहीं है। इस तरह के कैपेबिलिटी जो है वो हमारे पास हो जाएगी और हम भी
बड़े बड़े देशों, अगर हम आप बड़े देश के तौर पर अमेरिका को लेते हैं, तो वैसे देशों को भी हम कभी भी काउंटर कर सकते हैं।